आज की इस वीडियो में आपको कैरिकुलर वैलिडिटी के बारे में बताऊंगा। द एक्सटेंट टू विच द कंटेंट ऑफ द टेस्ट मैचेस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेसिफिक कैरिकुलम एज इट इज़ फॉर्मली डिस्क्राइब्ड। इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारा कंटेंट है टेस्ट का, उसमें ऑब्जेक्टिव्स जो मकासद हैं किसी भी ख़ास निसाब के हवाले से, किसी भी स्पेसिफिक कैरिकुलम के हवाले से, वो उनके साथ मिलता भी है कि नहीं। टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से बनाया गया है, उन ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, या फिर आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स से बनाया गया है। Curricular validity takes on particular importance in situations where tests are used for high-stakes decisions. Curricular validity वाले टेस्ट जो हैं उस वक्त लिए जाते हैं, पार्टिकुलर इम्पोर्टेंस इनको ख़ास अहमियत दी जाती है इन सिचुएशंस, उन हालात में वेयर टेस्ट आर यूज्ड फॉर हाई स्टेक डिसीजन, जहाँ पे टेस्ट को हाई फैसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ एज पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन एग्ज़ाम फॉर 5th and 8th ग्रेड, जैसा कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन पैक जो है वो 5वीं और 8वीं के क्लासों के तलबा का टेस्ट लेते हैं, एंड बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन और बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 9th 10th और 11th और 12 का टेस्ट लेते हैं। इन दीज सिचुएशन, इन हालात में कैरिकुलर वैलिडिटी मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ ए टेस्ट, कैरिकुलर वैलिडिटी का ये मतलब है कि जो टेस्ट बनाया गया है उसमें जो कंटेंट है दैट इज यूज टू मेक ए डिसीजन, उसमें हम इस टेस्ट के हवाले से फैसला करते हैं अबाउट वेदर ए स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल, के स्टूडेंट को जो है वो अगले लेवल तक प्रमोट किया जा सकता है या नहीं। शुड मेजर द कैरिकुलम दैट द स्टूडेंट इज टॉट इन स्कूल्स, जो टेस्ट है वो कैरिकुलम के हवाले से होना चाहिए जो कि स्कूलों में पढ़ाया गया है। कैरिकुलर वैलिडिटी इज एवेलुएटेड बाय ग्रुप्स ऑफ कैरिकुलम कंटेंट एक्सपर्ट्स। कैरिकुलर वैलिडिटी जो है वो एवेलुएट की जाती है, जांची जाती है बाय ग्रुप्स ऑफ कैरिकुलम और कंटेंट एक्सपर्ट्स। The experts are asked to judge whether the content of the test is parallel to curriculum objective. जो एक्सपर्ट्स होते हैं, माहिरीन होते हैं, उनसे ये फैसला करवाया जाता है कि जो टेस्ट का कंटेंट है वो कैरिकुलम ऑब्जेक्टिव, निसाब के जो मकासद हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है, एंड वेदर द टेस्ट एंड कैरिकुलर emphases are in proper balance. Table of specification may help to improve the validity of the test. जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है ये मदद कर सकता है टेस्ट की वैलिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। बिफोर डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को की तारीफ करने से पहले इट सीम्स नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है, टू एलब्रेट द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट, ये जो कंस्ट्रक्ट का कंसेप्ट है उसको बयान किया जाए। इट इज़ द कंसेप्ट और द कैरेक्टरिस्टिक, ये ख्याल है या फिर खसूसियात है, डैट ए टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू मेजर, कि एक टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, पैमाइश के लिए। ए कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड्स the target that a particular assessment or set of assessment is designed to measure. एक कंस्ट्रक्ट टेस्ट जो है वो मुहैया करता है, एक टारगेट देता है, डेट ए पार्टिकुलर असेसमेंट, एक ख़ास जायज़ा जो है, और सेट ऑफ असेसमेंट्स इज़ डिज़ाइन टू मेजर, कि उससे हम क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं। इट इज़ ए सेपरेट एंटिटी फ्राम द टेस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू हॉवल इन 1992. Construct validity is the test ability to measure factors which are relevant to field of study. Construct validity जो है ये एक टेस्ट है जिसमें हम ability measure करते हैं किनके हवाले से, उन फैक्टर्स के हवाले से which are relevant to the field of study, जिनका ताल्लुक मुताले से होता है। Construct validity is thus an assessment of the validity, जो construct validity है इसमें हम
असेसमेंट की क्वालिटी देखते हैं, ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसी भी आले की और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या फिर तजर्बे की। इट सेज डज इट measure the construct it is supposed to measure. Construct validity is rarely applied in achievement test. Construct validity जो है उसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं अचीवमेंट टेस्ट में। Construct validity refer to the extent to which the operationalization of a construct. Examples: practical tests developed from a theory do actually measure what the theory says they do. For example, to what extent is an IQ questionnaire actually measuring intelligence? Construct validity evidence involves the empirical and theoretical support for the interpretation of the construct. Such lines of evidence include statistical analysis of the internal structure of the test, including the relationship between responses to different test items. They also include relationships between the test and measures of other constructs. As currently understood, construct validity is not distinct from the support for the substantive theory of the construct that the test is designed to measure. As such, experiment designs to reveal aspects of the causal role of the construct also contribute to the construct validity evidence. Construct validity occurs when the theoretical constructs of cause and effect accurately represent the real world situation they are intended to model. This is related to how well the experiment is operationalized. A good experiment turns the theory into actual things you can measure. Sometimes just finding out more about the construct, which itself must be valid, can be helpful. The construct validity addresses the construct that are mapped into test atoms. It is also assured either by judgmental method or by developing the test specification before the development of the test. The constructs have some essential properties. The two of them are listed as under. Number 1 are abstract summaries of some regularity in nature, regulate with concrete observable entities. For example, integrity is a construct. It cannot be directly observed, yet it is useful for understanding, describing, and predicting human behavior. Types of construct validity. कौन सी types हैं construct validity के? There are different types of the construct validity. The convergent and discriminant validity are explained as follows. Convergent validity. Convergent validity refers to the degree to which उस सतह को कहते हैं जहाँ तक a measure is correlated with other measures, जहाँ पे एक पैमाइश का दूसरे पैमाइश के साथ क्या ताल्लुक है. That is theoretically predicted to correlate with. Or convergent validity occurs when measures of constructs that are expected to correlate to so. There is similar to construct validity which looks for correlation with other tests. For example, if scores on a specific mathematics test are similar to student scores on other mathematical test. For example, एक मिसाल ली गई है कि मैथमेटिक्स का रियाजी का एक ख़ास टेस्ट लिया गया है जिसमें स्कोर स्टूडेंट्स के जो हैं वो एक जैसे हैं किसी भी दूसरे रियाजी के टेस्ट में. देन कन्वर्जेंट वैलिडिटी हाई. तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो है उसकी हाई है. देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स फ्रॉम सिमिलर टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स. एक ही तरह के मैथमेटिक्स के टेस्ट के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक है. Discriminant validity. Discriminant validity describes the degree to which the operationalization does not correlate with other operationalizations that it theoretically should not be correlated with.
डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अकर्स वकू पजीर होती है वेयर कंस्ट्रक्ट दैट आर एक्सपेक्टेड नॉट टू रिलेट विद ईच अदर, जहाँ पे कंस्ट्रक्ट्स जो हैं वो उनके बारे में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उनका आपस में कोई ताल्लुक है। सच दैट इट इज़ पॉसिबल टू डिस्क्रिमिनेट between these constructs. For example, if discriminant validity is high, अगर discriminant validity high होती है, scores on a test designed to assess students' skills in mathematics should not be positively correlated with scores from tests designed to assess intelligence. Convergence and discrimination are often demonstrated by correlation of the measures used within constructs. Convergent validity and discriminant validity together demonstrate construct validity. Criterion validity. Criterion validity evidence involves the correlation between the test and a criterion variable or variables taken as representative of the construct. In other words, दूसरे अल्फाज में it compares the test with other measures. इसमें टेस्ट जो है वो दूसरी मेजर्स के साथ का मवाजना किया जाता है और आउटकम्स already held to be valid. For example, employee selection tests are often validated against measures of job performance. जो एम्प्लॉय सिलेक्शन टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर वैलिड होते हैं किसी भी जॉब की कारकर्दगी के हवाले से। And IQ tests are often validated against measure of academic performance. जो IQ टेस्ट जो होते हैं उनकी वैलिडिटी जो होती है वो तालीमी कारकर्दगी के हवाले से होती है। If the test data and criterion data are collected at the same time, अगर टेस्ट डेटा और क्राइटेरियन डेटा जो है उसको एक ही वक्त में इकट्ठा किया जाता है, this is referred to as concurrent validity evidence. इसको हम क्या कह सकते हैं? Concurrent validity evidence. If the test data is collected first in order to predict criterion data collected a later point in time, then this is referred to as predictive validity evidence. For example, the company psychologist would measure the job performance of new artists after they have been on the job for 6 months. He or she would then correlate scores on each predictor with job performance scores to determine which one is the best predictor. Concurrent validity. According to Howell 1992, concurrent validity is determined using other existing and similar tests which have been known to be valid as comparison to a test being developed. There is no other non-valid test to measure the range of cultural issues tested for this specific group of subjects. Concurrent validity refers to degree वो सतह है to which जहाँ तक scores taken at one point correlates with the other measures, test, observations or interview of the same construct that is measured at the same time. Returning to the selection test example, this would mean that the tests are administered to current employees and then correlated with their scores on performance reviews. This measure the relationship between measures made with existing tests. The existing test is thus the criterion. For example, a measure of creativity should correlate with existing measures of creativity. For example, to assess the validity of a diagnostic screening test, in this case, the predictor X is in the test and criterion Y is the clinical diagnosis. When the correlation is large, this means that the predictor is useful as a diagnostic tool. Predictive validity. Predictive validity assures how well the test predicts some future behavior of the examinee. प्रिडिक्टिव टेस्ट इस चीज़ की यकीन दहानी कराता है कि हाउ वेल द टेस्ट प्रिडिक्ट्स, ये टेस्ट जो है वो
फ्यूचर्स के बिहेवियर के हवाले से इम्तिहान देने वाले के बारे में क्या बताता है। इट वैलिडिटी रेफर्स टू डिग्री टू विच द ऑपरेशनलाइजेशन कैन प्रिडिक्ट or correlate with other measures of the same construct that are measured at the same time in the future. Again, with the selection type example, this would mean that the tests are administered to applicants. All applicants are hired, their performance is reviewed at a later time, and then their scores on two measures are correlated. This form of validity evidence is particularly useful and important for the aptitude test, which attempt to predict how well the test taker will do in some future setting. This measures the extent to which the future of the variable can be predicted from a current measures. This includes correlation with measurement made with different instruments. For example, a political poll intends to measure future voting intent. College entry tests should have a high predictive validity with regard to final exam results. When the two sets of scores are correlated, the coefficient at result is called the predictive valid coefficient. Examples of predictive validity. Number 1, if the higher scores on the board exams are positively correlated with higher GPA in the university and vice versa, then the board exam is said to be predictive validity. अगर बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं वो हाई होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जब उनका एडमिशन होता है वहाँ पे जाकर उनका जीपीए भी हाई होता है, या फिर इसी तरह अगर मार्क्स कम है और जीपीए भी कम है, तो फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम्स का जो is said to be high predictive validity. तो बोर्ड एग्ज़ाम्स को हम क्या कह सकते हैं, इनकी predictive validity ज़्यादा है. We might theorize that a measure of math ability should be able to predict how well a person will do in an engineering based profession. एक हमारे पास मैयर है किसी मैथ की जिसमें हम एबिलिटी इस सलियत को प्रिडिक्ट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि इंजीनियरिंग के शूबे में वो आदमी जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा अगर वो उसकी ये मैथ एबिलिटी अच्छी है. The predictive validity depends on the following two steps. प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है उसके अनुसार नीचे दिए गए दो इकदामात पे होता है. Obtain test scores from a group of respondents but does not use the test in making a decision. Obtain test scores हासिल करदा टेस्ट के जो नंबर होते हैं फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स, इम्तिहान देने वालों के, डू नॉट यूज़ द टेस्ट इन मेकिंग डिसीजंस, उनको हम इस्तेमाल नहीं करते फैसला करने में. एट सम लेटर टाइम, वक्त गुजरने के बाद या कुछ वक्त के बाद, ऑब्टेन ए परफॉर्मेंस मेजर फॉर दोज रिस्पोंडेंट्स, परफॉर्मेंस उनकी कारकर्दगी जो होती है कुछ वक्त के बाद उसको हम को रिलेट करते हैं उस टेस्ट के इम्तिहानात के साथ टू ऑब्टेन प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, जिससे हम प्रिडिक्टिव